Hi children. Hello ma'am. How are you? I'm fine ma'am. And you? I'm also fine. Okay. First of all, tell me which symbol is this? Addition. Addition. And which symbol is this? Subtraction. And this? Multiplication. And this one? Division. Yes. Addition, subtraction, multiplication and division. बेटे इसे हम लोग बेसिक ऑपरेशन कहते हैं. बेसिक ऑपरेशन कितने होते हैं? बेसिक ऑपरेशन आर ऑफ 4 types. Is it clear? So today we will learn inverse relationship of division and multiplication. Please look on the screen. Here 3 numbers are written. 2, 3 and 6. इस कंटेंट में आज हम लोग एक मैजिक देखते हैं. बहुत मजेदार है. 2 into 3 are 6. 3 into 2 are 6. ये क्या है? मल्टीप्लाई. अब इस नंबर का यूज करके हम डिवाइड करेंगे. 6 divided by 2 is equal to 3 and 6 divided by 3 is equal to 2. है ना मैजिक? Similarly, we take another example. Here 10 marbles are given. First of all, we will learn the concept of multiplication. 10 marbles means 5 के 2 groups हैं. 5 times 1 are 5. 5 times 2 are 10. Similarly, 2 times 1 are 2. 2 times 2 are 4. 2 times 3 are 6. 2 times 4 are 8. 2 times 5 are 10. अब डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं. You can see on the screen 10 marbles divide into 2 equal parts. 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आएगा. सेम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. सिमिलरली एग्जाम्पल 2 इज सेम. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम है. वी हैव टेकन इनवर्स रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जैसे 3 multiply 6 is equal to 18 in multiplication and 18 divided by 3 is equal to 6 in division. Today we will learn maths activity. इस एक्टिविटी के थ्रू डिवीजन कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल करके दिखाया है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू फाइंड क्वोशिएंट बाय एक्टिविटी मेथड इन डिवीजन. प्रिपरेशन फॉर द एक्टिविटी. You can see there are 3 steps. Let us divide 18 by 3. अब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे. Step 1. Take 18 objects. आप कुछ भी ले सकते हैं. बिंदी, बटन्स, मार्बल्स, कुछ भी. Step 2. Step 2 में क्या करेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसे 6 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Step 3 में यहाँ हम लोग देखेंगे हर ग्रुप में 3 marbles दिख रहे हैं. Thus, we conclude that 18 divided by 3 is equal to 6. Now it's practice time. Let us practice. Because practice makes man perfect. So we will practice questions by enjoying. First question is individual activity. यहाँ पे एक्टिविटी आपको खुद करनी है, इसलिए यहाँ पर individual activity right है. The first question is find the following by activity method. Use bindis. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 20 divided by 4 is equal to 5. ये आपको एक्टिविटी की मेथड से करना है. जैसे आपने देखा ना हमने मार्बल्स में कैसे उसको डिवाइड किया था अलग अलग ग्रुप्स में. इन द सेम वे आपको यहाँ पे भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनवर्स रिलेशनशिप, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. एज वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन फॉर यू. सिंस 7 multiplied by 5 is equal to 35, then 35 divided by 7 is equal to 5. In the same way, you have to do rest of the all. I hope all of you have understood today's concept. Relationship between division and multiplication through activity. Thank you. We will meet in next video.